Hello everyone, this is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. As we have been discussing about metacognition क्या है, thinking about thinking, जागरूक होना अपनी सोचने की प्रक्रिया के बारे में और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, राइट? वी टॉक्ड अबाउट मेटाकॉग्निटिव नॉलेज ऑल्सो, एंड उस नॉलेज के साथ में आगे हमने कैसे करना है, उसमें चेंजेस कैसे लानी है, उस प्रोसेस को कैसे करना है, वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम ऑफ द मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज दैट वी कैन यूज विद आवर स्टूडेंट्स, राइट? देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव एंड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज. जो हम पढ़ाते हुए बच्चों को डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं वो है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, राइट? सो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज जब बच्चों को अपने थिंकिंग के प्रोसेस के बारे में सोचने का मौका मिले एंड they will be given a chance to change the strategy of learning, right? That is metacognition. So I am going to share with you today metaphors and analogies. Metaphors, languages में figures of speech, poetic devices we have been teaching to our students. हिंदी में अलंकार, रूपक अलंकार हमने बच्चों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि किस तरीके से वो सीखते हैं कि चीजों को कंपेयर करते हैं किसी के साथ में, लाइक गुरुपद पंकज, पद पंकज, राइट? आई मीन दैट इज अ रूपक अलंकार. सो मेटाफॉर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. वी हैव बीन टीचिंग द सेम टू आवर स्टूडेंट्स. वी हैव आस्क्ड देम, आई मीन इसमें सिमिलीज के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक as proud as peacock, right? As brave as lion. तो आई मीन इस तरीके से भी बच्चों को कुछ एग्जाम्पल देके सिखा सकते हैं, मेटाफॉर्स के थ्रू सिखा सकते हैं, सिमिलीज के थ्रू सिखा सकते हैं, एनोलॉजीज के थ्रू बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि वो कैसे चीजों को याद रखें. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू से ग्रीन इज फॉर गोइंग एंड गो एंड रेड इज फॉर स्टॉप. तो इस तरीके की एनोलॉजीज बच्चे बहुत सारे मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं उसमें जीके में बहुत चीजें सीखते हैं. तो हम उनको अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेट करें? तो बीइंग अ साइंस टीचर आई विल बी गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम साइंस. So you can develop your own examples in your respective subjects. So here you go, my dear educators, using a metaphor to help explain something is a bit like using a physical model. मैं क्लास में एक फिजिकल मॉडल बना के लेकर गई हूँ. अगर मैं बच्चों को दिखा रही हूँ कि ये ऐसा होता है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, मैं उसका मॉडल बनाकर लेके गई हूँ. तो अगर मैं उसको मेटाफोर से बता दूं कि ये ऐसा होता है, लाइक जो इसका फंक्शन है वो ही इसी का फंक्शन है. सो दिस इज एज गुड एज शोइंग अ फिजिकल मॉडल इन द क्लासरूम, right? And metaphors can help students think through ideas. They'll get different ideas कि ये चीज ऐसे फंक्शन करती है, तो जिसके एग्जाम्पल के थ्रू मुझे समझाया जा रहा है, that object, that thing also function in the same manner. But I will be now sharing with you few of the examples. You have to think about strength and weaknesses of different metaphors that I'll be sharing with you. You can discuss with your children also, right? And think about how successfully it enables students to understand the ideas. And sometimes हम ऐसे मेटाफोर्स भी यूज करते हैं दैट मे लीड टू सम काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस. तो हमें उसके बारे में सोचना है कि जो मेटाफोर हम यूज करें वो किसी तरीके की मिसकंसेप्शन ना क्रिएट करे, बच्चों को मिसलीड नहीं करे, ओके? एंड क्योंकि फिर मेटाफोर यूज करने का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है, राइट? सो देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. फॉर एग्जांपल, होम्योस्टेसिस आप पढ़ा रहे हैं साइंस में. आई टोल्ड यू आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल्स फ्रॉम साइंस. सो होम्योस्टेसिस जैसे है कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है कि उसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है, नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज गोइंग आउटसाइड. बाहर की कंडीशंस को छोड़कर हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है नॉर्मल वो मेंटेन करना है. तो बच्चों को आप इसमें मेटाफोर कौन सा बता सकते हैं? सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, राइट? तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के साथ कंपेयर करके आप उसकी एग्जांपल देके बच्चों को सिखा सकते हैं. दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम. अनदर एग्जांपल इज एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सीजर्स, right? That is visible to you in the pictures as well, how they function, right? So they will be able to understand कि कैसे उसमें अपना they seize the DNA different parts and they are able to get the space for that target sites, then किस तरह से वो stick होते हैं, किस तरीके से new product बनता है. So you give them example of that enzymes are molecular scissors. So that kind of a question is also there in children's syllabus too, like how can you say that enzymes are molecular scissors? So these kinds of metaphors you can use. Now bonding, covalent bonding, you can use molecules there joining hands. It's like when two molecules join hands, that is a covalent bonding. That is again a metaphor, right? So now magnetism is like gravity.
So, but that I've told you, talk about strength and weaknesses. Obviously, in the picture, it is being shown gravity versus magnetism. Means there can be some plus points. There at some points it can be different also, but at least to make the children understand, because in the junior classes they read about gravity. So when they go ahead in the senior classes, they try to understand magnetism, and you can explain them like it is like gravity, like attracting towards like attracting the objects towards itself. So this is how you can relate the same. Now another example for today is electricity. Like electrons, they carry packs of energy around a circuit. So I mean, this kind of image you can show, like they carry packets of energy. Other things also you can show with through different diagrams. Also they can draw also carrying packets of energy. So this is how, my lovely educators, you can use different metaphors, that is alankar and analogies, to make your children understand. You see different kinds of concepts, they'll be able to relate the same. So this is one strategy that you can use in your classes. In my upcoming videos, I'll be sharing with you more such innovative metacognitive strategies, so that children, they can swap between different strategies as and when required. Bye bye from Minakshi Narula. Have a nice day.